The palm of the hand is the essential tool for getting this painting technique just right. Rogan art is a centuries-old craft, and it's been in Abdul Ghaffur Khatri's family for 8 generations. These designs were once popular throughout India, but the rise of industrial textiles forced many artisans to leave the craft for more lucrative work. Today, the Khatri family members say they're the only Rogan artists left in the world. परंपरा है हमारी, दादाजी, पिताजी और चाचा जी वगैरह, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला चली आ रही है. But the COVID-19 pandemic is now threatening their business. We take a look at how one family has left this tradition still standing. It all starts with castor oil. It's the base of the paint, and it's what gives the art its name. Rogan means oil in Farsi. Ghaffur's cousin, Mohammed, heats the oil for 2 days until it becomes a honey-like texture. It's a dangerous process only a few can handle. 4-5 केजी जो ऑयल होता है उसमें कभी भी फायर हो सकता है, तो ये बहुत डेंजर भी है. और इस प्रोसेस के लिए हमारे सभी परिवार के लोग मास्टर नहीं है. Once it's cooled, Ghaffur's son Jabbar combines it with pigment to create the paint. उसको पत्थर के ऊपर रगड़ के पानी से थोड़ा भिगो के ग्राइंड करके रोगन उसमें वो भी अंदाजे से मिलाया जाता है. ऐसा नहीं कि 100 ग्राम रोगन है 50 ग्राम, वो ऐसा नहीं, अंदाजे से वो कूटते हैं दूसरे पत्थर से, वो रंग और रोगन एक हो गया. Then it's time to paint. Ghaffur says it's the use of the hand that gives Rogan art its unique quality. अगर कटोरी से डायरेक्ट उस कलम को कलर से उठाया तो डायरेक्ट आप उसका तार नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत थिक रहता है. अभी उसको हाथ पे रख के इस कोने पे रख के हमको रगड़ना है. Swirling the paint into his palm creates heat to thin it out. Then, Ghaffur floats the thread of paint over the fabric using a metal rod. He runs his other hand underneath the cloth to guide the paint. He has an idea of the final design in his mind, but the painting process is completely freehand. जो पूरा तार इसका परफेक्ट जो चल सकेगा, कितना खींचेगा, वो सब आर्टिस्ट के दिमाग में रहता है. ये सब गॉड गिफ्ट है, कुल मिला के गॉड गिफ्ट है. ये हर किसी की बस की बात नहीं है, न किसी मशीन का काम है इस चीज़ के लिए. Before it dries, Ghaffur folds the cloth to print the design's mirror image. He can finish some pieces in 5 days, while more complex designs can take him up to 2 years. इसमें जो बारीकी है ये येलो कलर की, वो एक एक बिंदी से कलम की पॉइंट से रखी गई है, जिसके लिए बहुत समय जाता है. और ये खास अपने आप में खास इसलिए माना जाता है. Wall art pieces like this one can cost over $1,000. Ghaffur and his family normally sell their pieces to tourists in the bustling streets of Nirona. But the pandemic put a strain on their peak season. और अभी तक तो ये बता सकते हैं कि पूरा लॉस में ही है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आए, तो ये बिजनेस टूरिस्ट के ऊपर जो डिपेंड है और तो कोई सोर्स है नहीं, तो क्या करना. अभी हम बैठे हैं, राह देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या करना है. The struggle feels familiar. The art is said to have come to India from Persia 400 years ago, and it was once popular on bedding and ceremonial clothing here in India. But with the rise of mass-produced textiles in the 80s, locals lost interest in these more expensive, handmade pieces. Many artisans couldn't compete with mass manufacturers and dropped their crafts to find other work. Ghaffur, too, made the hard decision to leave the family business and look for work in Mumbai. पहले बताया कि 1980 के आसपास मैंने तय कर लिया था कि मैं इस कला में अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा. और हमारा थोड़ा बहुत इस बात से थोड़ा ये भी हुआ परिवार के सामने, क्योंकि उस समय गांव का कोई लड़के को वहाँ तक मुंबई तक भेजना वगैरह, तो वो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, मैं समझता हूँ. But a sense of responsibility and a plea from his family brought him back. और तू नहीं आया तो ये पीढ़ी बंद होगी, आगे नहीं चलेगी. और मुझे याद है उस समय मैंने उनसे ये वादा भी किया था कि अभी मैं पूरी लाइफ इसी कला के पीछे लगा दूंगा और दुनिया भर में कोशिश करूंगा कि दुनिया भर में इस कला का नाम हो,
मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो वादा अभी पूरा हो गया। Since then, Gafoor has brought Rogan art to the international level. He's earned over 10 awards for his work, and India's Prime Minister gifted one of his pieces to President Barack Obama in 2014. And just as Gafoor learned from his father and grandfather, now his son is determined to carry on the legacy. हाँ मतलब जैसे मैंने पहली बार ट्राई किया तो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, फिर जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको सीखने को मिला तो तभी जाके मैं लगा नहीं, ये एक बहुत बड़ी विरासत है हमारी फैमिली को और इसको हमें बचा के रखनी चाहिए. He's committed to preserving Rogan art through education and social media. वो ज़रूरी है और इसलिए कि क्योंकि हमारे जैसे फैमिली मेम्बर लिमिटेड है 10 लोग, तो हम अभी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले कि यार इतना रेयर है. Before the pandemic, the Khatri family ran workshops. Since 2010, they've trained around 300 women, and 20 of them went on to work for the family. But when COVID-19 started to spread in March, business slowed and Gafoor couldn't afford to keep them employed. Still, the family stays relevant with new products like face masks, and they have big plans to expand the business. तो हम ये भी चाहते हैं कि कोई 2-3 डिज़ाइनर हो ऐसे इंडिया से या बाहर से कहीं पे भी जो हमारी हेल्प करे डिज़ाइनिंग में, ताकि हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया. Though sales might be slow until tourists can start visiting again, Gafoor believes he knows what it takes to be successful. इस कला के लिए तो पेशेंस ही पेशेंस चाहिए, लेकिन इस कला को सेल के लिए भी पेशेंस रखना पड़ता है.